संखेड़ा तालुका के एक गांव में से साला से छूटने के बाद 6 जितनी लड़कियां अपने घर की ओर जाने के दौरान पिकअप टेम्पो में सवार होने के दौरान पिकअप के टेम्पो चालक द्वारा लड़कियों की छेड़खानी करते हुए लड़कियों ने मौत की छलांग लगाने के बीच घायल हुई थी। जो ये घटना में पुलिस ने तत्काल रूप से अपराधी की गिरफ्तारी की है। गुजरात राज्य में बढ़ रही वैसी महिला और लड़कियों की असलामती असुरक्षा के मुद्दे एक और घटना प्रकाश में आई है, जिसमें छोटा उदयपुर जिला संखेड़ा तालुका के एक गाँव की शाला से छूटने के बाद प्राइवेट पिकअप टेम्पो में घर की ओर जा रही वैसी 6 जितनी लड़कियों को पिकअप के टेम्पो चालक तथा अन्य सागरितों द्वारा लड़कियों की छेड़खानी करने का किस्सा प्रकाश में आया है, जिसमें 6 जितनी लड़कियां पिकअप टेम्पो में सवार होते हुए अपने घर की ओर जा रही थी, जहां नशे में धुत वैसा पिकअप का टेम्पो चालक और अन्य सागरितों ने लड़कियों की छेड़खानी करते हुए डरी और घबराई हुई लड़कियों ने अपनी जान बचाने के लिए कुछ समझे उससे पहले ही टेम्पो से मौत की छलांग लगाई थी। अपनी जान बचाने के लिए टेम्पो से कूद पड़ने के बीच 2 से 3 लड़कियां गंभीर रूप से घायल हुई है। जो ये घटना में 2 लड़कियों को बोडेली की एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जबकि अन्य लड़कियों को अन्य हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के बीच स्थानिक विस्तार में अफरा तफरी और हलचल का माहौल पैदा हुआ था, जहां पुलिस ने इसकी गंभीरता को समझते हुए पॉस्को और लूट सहित की गंभीर कलम को दर्ज करने के साथ टेम्पो चालक की गिरफ्तारी की है। टेम्पो चालक वैसा अश्विन भी नशे की हालत में धुत बरामद करते हुए उसके अन्य सागरितों को भी पकड़ने की दिशा में पुलिस ने कार्यवाही का दौर जारी किया है। तो वही ये बहुचर्चित घटना अंतर्गत सांसद गीताबेन राठवा, विधायक अभयसिंह तड़वी, तालुका पंचायत प्रमुख शीतल कुंवरबा माहोरल, जिला पंचायत की प्रमुख मलकाबेन पटेल सहित तमाम आगेवान घायल वैसी लड़कियों को हूफ और आश्वासन देने के लिए आ पहुंचे थे। पिकअपમાં આવતા આગળ 3 વ્યક્તિ હતા ને પાછળ 2, તો આગળથી એક કાકો ઉપર ચડીને આવીને 2-3 છોકરીઓને અંદર ખેંચી કાઢી, એટલે આ બધી છોકરીઓ ચાલુ પિકઅપમાં નીચે ઉતરી ગઈ, એટલે કૂદી ગયા, એટલે પિકઅપ વધારે ફાસ્ટમાં જવા દીધું નથી। કોસનરાથી બેઠી ઇન્ડિયા આવતા હતા ના છેડખાની पिकअपवाला હતા તેમને હાથ પકડતે અને કીધું કે ઊભી રાખો, તે બી ઊભી નથી રાખતી, હાથ પકડીને અંદર ખેંચી પછી શું થયું બેટા? પછી અમે બધા કૂદ્યા અને આ બીજા કૂદ્યા ને તો કીધું કે ઊભી રાખો, તે બી ઊભી જ નથી રાખતા, જવા દેતે બસ। પછી તમે શું કર્યું? અમે કૂદ્યા, પછી આગળથી પહેલાં બીજા અડધોને ઉતારી પહેલાં પછી જવા દીધી। જે અમારી દીકરીઓ સાથે ઘટના બની છે, ખૂબ દુઃખ અનુભવું છું કે અમારી સરકારમાં દીકરીઓને ભણાવી ગણાવીને આગળ આવે, દીકરીઓ પોતે પોતાનું કામ કરી શકે એના માટે સરકાર કટિબદ્ધ છે। પરંતુ કાલે જે ઘટના બની છે ખૂબ જ ગંભીર છે। દીકરીઓની જે સાથે કૃત્ય કરવામાં આવ્યું, દીકરીઓને ચાલુ વાહનમાંથી કૂદકો મારવાની ફરજ પડી, આ ખૂબ ગંભીર બાબત છે। જે કોઈ ગુનેગાર હશે એને કડકમાં કડક સજા થાય એવું અમે પોલીસ વિભાગમાં વાતચીત કરી છે। ગુનેગારો એક તો પકડાયો છે, બીજા કોઈ બાકી હોય એને પણ પકડીને કડકમાં કડક સજા થાય અને બીજી વખતે આવું કૃત્ય કરનારને પહેલો વિચાર આવે કે આ કડક સજા થાય છે એવો વિચાર જ મનમાં ન આવે, એવી વાત અમે પોલીસ વિભાગમાં કરી છે। અને મને આશા છે કે આ અમારી જે વાત છે એ ત્યાં સુધી પહોંચશે અને કડક સજા થશે। આ દીકરીઓ જે હોસ્પિટલમાં છે, થોડી ઘણી ઈજા થઈ છે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે જલ્દી સારી થઈ જાય।